at first they combine with the endoplasmic reticulum, membrane of the endoplasmic reticulum, and from this endoplasmic reticulum there will be the formation of this Golgi vesicle. That Golgi vesicle shows the presence of this virus inside it. So we can see the formation of mature viron is there. Now this Golgi vesicle, when it again joins with the membrane, plasma membrane of the host cell, then these virus particles, they get released outside the host cell via the exocytosis process, and thus the multiplication of virus particle will be there. Now, up till now, we had seen that number of microorganisms are there, and all these microorganisms, they are responsible for causing harm to the human being. Accordingly, there will be some of the microbial myths. The first myth will be there, that is microbes, they are bad. No, all the microbes, they are not bad. Some of the microbes, they are helpful too, they are beneficial too for the human health. The only second myth is that only good microbe is a dead microbe. जैसे माइक्रोब की डेथ होती है तो डेथ होने के बाद वो माइक्रोब गुड माइक्रोब कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. डेड माइक्रोब्स, दे आर इक्वली हार्मफुल इफ दे आर releasing any toxic material, any poisonic substances, and that toxic materials, they are also for causing the diseased state in the human being. E. coli बैक्टीरिया, दे आर ऑल सेम. हमारा जो गट है, गट फ्लोरा जो है, तो गट फ्लोरा में हम E. coli बैक्टीरिया सेल्स देख सकते हैं. द प्रेजेंस ऑफ E. coli, that also indicates the pollution of the water due to the human excreta. This is one of the bioindicator E. coli bacteria, and according to some, these all E. coli bacteria, they are considered to be always dangerous, but it is not like that. The biggest microbial health concern is in building is mold. Mold, whenever we'll find the presence of fungus or mold in our houses or to our belongings, then we generally say that there will be the unhygienic condition, and it will be responsible for causing any death health situation issue to the human being. But it is not like that. Microbes in the built environment, they affect everyone the same way. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल जो है माइक्रोब्स प्रेजेंट है तो हर एक इंडिविजुअल्स को डिसीज हो सकता है, क्योंकि the immune system of all the individual, it works differently. Some of the individuals, they are sensitive for some of the organisms, while some are resistant, and that's why these microbes, they cannot affect in the same way. So this will be another myth. And last myth, we can say that the people, they usually say that I need antibiotics for my cold. Whenever there is a cold condition, the person suffers from cold, then he generally asks for antibiotic. Antibiotics, they are generally used to kill, they are generally used to neutralize the bacterial infections, sometimes the fungal infections that may be cured by the antibiotics. But if the viral infection is there cold, it may be due to the viruses, and if the viral infection is there, then viral infections cannot be cured by antibiotics. मॅडम 2 मिनिटं. आपल्या आजच्या वेबिनार मध्ये चाळीसगाव महाविद्यालयातील डॉक्टर किशोर बेंद्रे उपस्थित आहे. त्यांचं मी महाविद्यालयाच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो. प्लीज कॅरी ऑन मॅम. Thank you, sir. So up till now we have seen that number of microorganisms, they are causing diseased conditions in the human being, and it is generally believed that microorganisms, they are always harmful. Whatever the microorganisms that we are exposing, they are said to be the harmful, but it is not like that. Some of the microorganisms, they are beneficial. They are not only the harmful microorganisms. Now, which are these beneficial microbes
how they will get, how the benefit is there. Generally, the microorganisms which are present. काहीतरी तांत्रिक प्रॉब्लेम येतोय. मॅडमांचा नेटचा इश्यू. ते मॅडम रिजॉईन होतील 2 मिनिट. मॅडम डिस्कनेक्ट झाले. त्यांची रिक्वेस्ट येईल, रिक्वेस्ट ऍक्सेप्ट करा सर. नाही आले अजून. There is some technical problem. Just a minute, wait for a minute. Internet weak आहे त्यांचं. हॅलो मॅडम. हॅलो हॅलो मॅडम. हॅलो. हा, आवाज येतोय मॅडम तुम्हाला? हा 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 सर. ओके सर. करू सर कंटिन्यू. आवाज येतोय ना मॅडम? हो 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 सर. हो सर. कंटिन्यू करा सर, कंटिन्यू करा. ओके ओके सर. ओके सर. So how these microorganisms, they help us to digest the food material we are dealing with. These microorganisms which are present in the alimentary canal, so they help us to digest like complex sugars or which are present in the plant material. Besides that, they will provide us vitamin B, vitamin K, and short chain acids. Thus, they are responsible for helping influence the nutritional value of the food we eat. Secondly, these microorganisms, they boost our immune system. These they mediate the relationship, teaches us our immune system, which invaders are friends, foes. जो भी ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं वो ऑर्गेनिजम्स पैथोजेनिक है या नॉन पैथोजेनिक, फ्रेंड्स है या फिर एनिमीज है, ये बताने का काम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म. This helps keep your body from attacking friendly gut bacteria needed for digestion. They also stimulate tissue around the gut to increase production of antibodies when needed. हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो मेंटल हेल्थ पर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म influence होता है. The brain and the gut which are connected via the vagus nerve, enteric nervous system, and the gut brain axis. So these connection, it is really responsible for our mental health. Our gut microbiota actually interact with our nervous system to regulate brain chemistry. So that's right. Our gut bacteria can actually response to stress, anxiety, and even your memory. Research has shown that gut bacteria serotonin and dopamine production. Dopamine production is one of the pleasure neurotransmitter substance. Serotonin is also the neurotransmitter substance, and both these serotonin and dopamine, they are responsible for maintaining the mental health. We know that our skin, it is the first site where the microbes they can attack, and this is the first line of defense. How it acts as a defense organ. So our skin, it is covered with a biofilm of microbes that form a protective layer over us.
These microbes protect us from bacterial and fungal invasion. They also convert skin oils into the natural moisturizers that keep our skin healthy. Skin health depends on the delicate balance between our own cells and the microbes that live on its surface. Lastly, we can say that these microorganisms, they protect us from the toxins. So the microorganisms like bacteria, biofidobacteria, the name of this bacteria is biofidobacteria. It is responsible for keeping toxins from passing through the intestinal wall into the bloodstream. So whatever the food material gets digested in the intestine, so that will get assimilated into the bloodstream, and along with the digested food material, the chances of some toxins they can be passed are there. And this bifidobacteria, it actually keeps the toxin away from passing through this intestinal walls. Microbiota, they also controls the metabolism and nutrient storage. It decreases the inflammation reaction. It produces antimicrobials, maintains tissue integrity, controls our blood pressure, and that's why we should say thanks to these microbiota, which is helpful for the human body. Uh, Along with bacteria, some of the fungus are there, and these fungus, they are found to be helpful for human being, because some of the fungus, they are having their medicinal property, and for this we cannot forget the penicillin, which is a wonder drug that is obtained from the Penicillium notatum. It is known as the penicillium. This is an antibiotic which is used to cure the bacterial infections. In our body, there are several microorganisms that are present in the nasal cavity, on the skin, oral cavity, gut, and vagina, and therefore they can stay in different habitats. Some microbes that colonize humans, they are called as commensals. Commensals, these are the organisms, or this is an interaction between different organisms. We can call it as eating on the same table, and here one organism, it may be beneficial, but another organism that may be that is neither benefited nor harmed. So these colonies, microbial colonies, they are found as commensals, whereas others, they have a mutualistic relationship between the with the host. There is a give and take business. The benefits, they are mutually shared between the host and the microorganisms, and these interactions, they are important for human to grow and stay healthy. Microbes which are present on the skin, first microbe is there, Bacillus subtilis, and this Bacillus subtilis, it produces bacitracin on the skin, a toxin that helps it in fighting with other microbes. Bacillus subtilis के साथ और भी बैक्टीरिया हमारे स्किन पे प्रेजेंट है, और इनमें स्टैफिलोकोकस ऑरियस, ये जो बैक्टीरिया है, सो दिस बैक्टीरिया, इट इज फाउंड टू बी पोटेंशियल pathogenic bacteria. So whenever the opportunity is there, so that opportunity, so it will grab that opportunity and it will get converted into the pathogenic bacteria. Nasal cavity में जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, they play a crucial role in determining the reaction patterns of the mucosal and systemic immune system. अलग अलग examples है यहाँ पे, कोरिनेबैक्टीरियम, ओरियोबैक्टीरियम, रोडोकोकस, स्टैफिलोकोकस. ये बैक्टीरिया में स्टैफिलोकोकस नेसल कैविटी में ज्यादा उनका डोमिनेंस दिखाई देता है. अब माइक्रोब, ओरल कैविटी के जो माइक्रोब्स है उनके ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं, यू कांट इमेजिन, देयर विल बी अबाउट over 600 species of microbiota or microbes which are present in our oral cavity, and most of these, they are beneficial to human health
but some they may transmit from commensal relationship to पैथोजेनिसिटी। पहले तो वो कुछ हार्म नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उनको पैथोजेनिसिटी उनकी दिखती है, उनके कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, एंड वी कैन से दैट द डिसीज कंडीशन इज देयर। बैक्टीरिया जो है तो हमारे मुंह के अंदर डेंटल प्लाक हम एक्सपीरियंस करते हैं। इफ द पर्सन इज हैविंग अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस, those thick layer that will be developed on the dentition and that is called as the dental plaque। अब ये डेंटल प्लाक की वजह से क्या होता है, टूथ सरफेसेस जो है वो डैमेज होते हैं, डेंटल कैरीज में उसका कन्वर्शन होता है, एंड नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे विल कंट्रीब्यूट टू कैरीज एंड पेरियोडोंटल डिसीज। ये चार्ट है जहाँ पे हम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अलग अलग डिसीजेस के देख सकते हैं और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। पिंपल के लिए सिंपल एक्ने और पिंपल्स जो है एक टाइप का स्किन डिसीज है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नीस ये उसका नाम है, जिसकी वजह से डेड स्किन सेल्स और क्लॉगिंग ऑफ हेयर होता है। जब जो हमारे फेस के ऊपर जो हेयर फॉलिकल्स है तो वहां पे अगर क्लॉगिंग होता है ऑयल की वजह से, डेड स्किन सेल्स गैदर होते हैं, तो फिर ये प्रोपियोनियो बैक्टीरियम एक्नीस का इन्फेक्शन हम देख सकते हैं और हमारे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स आते हैं। ये डायरेक्ट कांटेक्ट और क्लोज कांटेक्ट की वजह से एक दूसरे को हो जाता है। एंथ्रैक्स है जिसके बारे में हमने देखा है, बैसिलस एंथ्रैक्सिस बैक्टीरिया है। इन्फेक्टेड मीट के साथ अगर कांटेक्ट वायरस का इन्फेक्शन होता है। विब्रियो कॉलरी जो है दैट इज द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म फॉर कॉजिंग कॉलेरा विच इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस डिसीज कंसिडर्ड। ये पानी मटेरियल के साथ स्प्रेड होता है। डिप्थेरिया, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया की वजह से के बाद या फिर एयर से ये डिसीज स्प्रेड होता है। प्लेग, एसिनिया पेस्टिस, इट कैन बी यूज्ड एज अ बायो वेपन। अगर बायोलॉजिकल वार हो सकते हैं तो वहाँ एसिनिया पेस्टिस ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको यूज किया जा सकता है। एयर या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट से इसका ट्रांसमिशन होता है। ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है। एयर से इसका इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिशन होता है। टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफी पानी से ट्रांसमिशन होता है। निमोनिया विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरसेस। बैक्टीरिया की अगर निमोनिया होता है तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये जो बैक्टीरिया है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग निमोनिया। Hemophilus influenza virus that causes pneumonia. Airborne droplet of sneezes or cough, they are responsible for this transmission. वायरसेस, एड्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकनगुनिया ये अलग अलग डिसीजेस है। सो दीज ऑल दीज आर द वायरल डिसीजेस caused by HIV, चिकन पॉक्स, वोरिसेला जोस्टर वायरस, स्मॉल पॉक्स, वेरियोला मेजर एंड वेरियोला माइनर वायरस, चिकनगुनिया वायरस। सो ये all these viruses they are transmitted either by blood exchange or body fluids। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के वायरसेस है तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के वजह से या फिर थ्रू एयर they get transmitted। चिकनगुनिया वायरस it can be transmitted through the अलग वायरल इन्फेक्शंस है जिसमें है डेंगू फीवर है, इबोला है, मीजल है, जीका वायरस है, एंड दीज आर ऑल द ऑर्गेनिजम्स which are responsible for causing these diseases। And here you can see that if you see the mode of transmission, then these viruses they may be spread transmitted either from air or airborne droplets or through the mosquitoes or from animal to man. If they get the man person get infected, then from person to person the transmission will be there। And lastly we can see the virus, the most important virus in the present scenario
which causes COVID-19 is SARS-CoV-2. So it is transmitted through the droplets of sneeze and cough. Protozoans, we have a little bit idea about amoebiasis, kala-azar, malaria, sleeping sickness. So all these are the familiar diseases. These are the causative agents which are responsible for these diseases, and they are transmitted from water or food. Sandflies, kala-azar, it is kala-azar is due to the sandflies that transmits this Leishmania genus. Anopheles mosquito is there that transmits the malaria. Tsetse fly, sleeping sickness, and so on. So friends, we can have the wise choices. So don't be scared of microbes. Most actually help you. If we know the disease that is transmitted by certain factor, then it will be always better to take the preventive measure than to go to the doctor. So all we know that there is a saying, prevention is always better than cure. Develop habits of cleanliness to keep hygienic conditions. Don't pressure your doctor to give you antibiotics, because all the times the antibiotics, they will not cure your viral diseases. If viral diseases are there, then we should go for another treatment. There are specific medicines, there are specific vaccines which are made for the viral diseases. So antibiotics, they will be not always good for the viral diseases. They may cause more harm than good. Now, if you know the cause, you can have the remedy. अगर हमें particular disease का cause मालूम है, अगर हम जानते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है, ये जो वायरस है, इसका ट्रांसमिशन का रीजन ये है, तो हम वहीं पे रुक जाएंगे. हम उसको वो पैथोजन जो है उसको आइसोलेट करेंगे, और उसका आइसोलेशन हमारे हाथ में है. हम पेशेंट को आइसोलेट करेंगे. हम जो अनहाइजेनिक कंडीशंस है उनको हम हाइजेनिक कंडीशंस में कन्वर्ट करेंगे. कुछ क्लीनलीनेस हैबिट्स हम डेवलप करेंगे, और फंगस है तो उसकी ग्रोथ हम होने नहीं देंगे. मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस है तो मॉस्किटो की लाइफ साइकिल एक्वेटिक बॉडी में कंप्लीट होती है, तो एक्वेटिक बॉडीज को, स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज को हम वहां से रिमूव करेंगे जितना पॉसिबल हो सके. लार्ज वाटर बॉडी है तो उसका ऑयल स्क्रीनिंग करेंगे. सो देयर आर डिफरेंट मेजर्स to prevent the pathogenic infections. So finally, I want to say that we are never alone. We are all the time, we are living with the microbiota. And if they are good, read them. Take them. Thanks for your patience. Audience, if you have any question, please ask question. Raise your hand first. विद्यार्थ्यांना काही प्रश्न हात वरती करायचा आहे, मला अनम्यूट करता येईल. बधाने सर काय बोलताय? बधाने सर, बधाने सर. बोला सर. हा सर बोला. हॅलो. हा बोला सर, आवाज येतोय. बधाने सर, तुमचा आवाज येतोय, तुम्ही बोला. विद्यार्थ्यांमधून कोणाला प्रश्न असेल त्यांनी हात वरती करून ठेवायचा आहे तोपर्यंत. पियुष यादव. साई सर. किती सर? हो. डॉक्टर बेंद्रे बघा तिथे, डॉक्टर बेंद्रे, त्यांना अनम्यूट करा ना. सेकंड पेजवर झालं. बोला सर. डॉक्टर बेंद्रे सर बोला. बेंद्रे सर. हॅलो. हा बोला सर. बेंद्रे सर,
हाँ बोला sir, सर. the activity which is run by Arts, Science and Commerce College, Nawapur is very good. The subject which is chosen by Dr. Bansode is very good, and nowadays we are facing very critical the viral diseases, and in such conditions, I think the subject of these microbes is very helpful for the students as well as the common people. Thank you very much, sir. थँक्यू सर. थँक्यू. बदाने सर, आवाज येतोय? हा हो येतोय. हा बोला सर. नाही मला नाही काय बोलायचं. छान लेक्चर दिलं मॅडमने. पियुष थँक्यू सर. एकदम पियुष छान. यादव. पियुष यादव बोल. हॅलो पियुष यादव. जयस्वाल सर. हाँ सर. हा बोला सर. कोणी विचारणार नाहीये का? नाही सर, वेळ पण संपण्यात आलाय. प्लीज. हो. सर्व पार्टिसिपंट्स मित्रांनो, माझे सहकारी प्राध्यापक मित्रांनो, डॉक्टर बनसोडे मॅडम यांनी अत्यंत माहितीपूर्ण असं व्याख्यान आज आपल्या समोर दिलेलं आहे. आणि सद्यस्थितीत आपण जी परिस्थिती संपूर्ण देशभर आणि जगभर लढतो आहोत, अशा काळामध्ये या माहितीची खरोखर उपयुक्तता होती आणि एका चांगल्या विषयाला मॅडमांनी मार्गदर्शन केलेलं आहे. मी महाविद्यालयाच्या वतीने डॉक्टर बनसोडे मॅडम यांचे आभार मानतो. आणि आजच्या या वेबिनार सिरीज मध्ये काही मित्रमंडळी उपस्थित आहे, त्यांची नावं घेणं मला क्रमप्राप्त आहे. डॉक्टर किशोर बेंद्रे, कुमारी मिनल मुंजानी, मिसेस मेघा वाघ, प्रिन्सिपल एच.एम. पाटील सर, प्रोफेसर किरण गावित, स्वतेजा मंगळे, मुंबईहून वेणुगोपाल चारी, अनामिका चंदेल, प्रोफेसर कोमल पाटील, चोपड्याहून डॉक्टर लोहार, ही सगळी मित्रमंडळी या वेबिनार सिरीज मध्ये आली आणि त्यांनी आमचा उत्साह वाढवला. त्याबद्दल या सर्वांचे महाविद्यालयातर्फे मी आभार मानतो. आणि आजची ही वेबिनार लेक्चर सिरीज संपली असं जाहीर करतो. धन्यवाद. थँक्यू सर. ओके. थँक्स टू ऑल. चित्ते सर. हो क्लोज करू. ओके. Blue meeting.